अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इस गुड मॉर्निंग के साथ आपके लिए है कुछ नया। सॉल्व विद मी इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई हैव प्लान समथिंग न्यू फॉर यू, जहां हम और आप एक साथ सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? वेल, अपने न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे सॉलिड और बहुत मजा आने वाला है। ऑफ कोर्स दिस गोज विदाउट सेइंग, जब चीजें समझ आने लगती हैं तो मजा ऑटोमेटिक आने लगता है। सो रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो शुरू करते हैं। वेलकम टू साइंस अरीना, आई एम मोनिका। So here comes your first question. Now before I begin to solve it with you, I hope you have your pen and paper ready, and of course I am sure that you do know your theories well. If you do not, you know exactly what you have to do. Go back to the previous videos, revise the topic and be ready for your numericals. So here comes the first one. So find the size, nature and position of the image formed when an object of size 1 centimeter, means height of object is 1 centimeter, is placed at a distance of 15 centimeter. So u हमेशा negative होता है. I hope you remember that. And what is the mirror I have? I have a concave mirror. So concave mirror का मतलब क्या हुआ? वेल हमें पता करना होगा भाई इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, राइट? अब f की वैल्यू तो हमें दी हुई है, द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर्स, बट ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव कैसे पता चलेगा? वेल हमें पैरेलल इंसिडेंट रेज लेने हैं, राइट? इमेजिन करना है, राइट? नहीं इमेजिन हो रहा है तो बना लेंगे. सो पैरेलल इंसिडेंट रेज आर गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द थ्रू द फोकस. सो फोकस इज बेसिकली ऑन द लेफ्ट. सो फोकल लेंथ मेरी लेफ्ट मतलब नेगेटिव, राइट? सो मुझे पता चल गया भाई हमारा फोकल लेंथ है नेगेटिव 10 सेंटीमीटर्स. अब तो कुछ करना ही नहीं है, हमें साइज निकालनी है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज निकालना है, राइट? और क्या निकालना है? और हमें पोजीशन निकालना है, राइट? पोजीशन मतलब v की वैल्यू निकालनी है. सो कैसे निकलेगा ये v? वेल खाली फॉर्मूला में डाल देना इन नंबर्स को. 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f is our mirror formula. So what is the focal length looking like? 1 by minus 10 centimeters equals 1 by v plus 1 by minus 15, right? अब क्या करना है? वेल माइनस 15, 1 by 15 को इधर करते हैं. So 1 by v is equal to 1 by minus 10 plus 1 by 15, right? So this is normal algebra. Addition of fractions करते हैं अब. So LCM is going to be 30, 10 3s are 30, 15 2s are 30, and what I have is a minus 1 by 30. So 1 by v is minus 1 by 30 means what? Well, it means that v equals minus 30 centimeters. तो ये तो आ गया हमारा the position of the image. और क्या चीज़ें निकालनी है हमें? वेल द नेचर ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द इमेज. सो वो भी निकाल लेते हैं. नाउ हाउ कैन वी डू दैट? वेल मैग्निफिकेशन वुड बी द करेक्ट फॉर्मूला टू यूज. सो मैग्निफिकेशन फॉर so magnification is equal to minus v by u, and it is also equal to hi by ho for a mirror, correct? So कैसे निकालेंगे? हमें पता क्या क्या है? हमें v की वैल्यू, u की वैल्यू और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इतनी सारी चीज़ें तो पता ही हैं, राइट? सो अब इनको हम फटाफट से अपने फॉर्मूला में डाल लेते हैं. सो लेट्स मेक यूज ऑफ व्हाट इज गिवन टू अस. इसका काम हो गया. सो व्हाट डू वी नीड नाउ? सो हियर वी हैव मैग्निफिकेशन एज माइनस v. v की वैल्यू हमें कितनी आई थी? माइनस 30. सो माइनस ऑफ माइनस 30, एंड व्हाट वाज u? u is minus 15 equals height of image I have to find out, and height of object is known to us as 1 centimeter. Minus minus तो चला गया. So what do I have? A minus 2 here. So minus 2 equals hi by 1 means hi is what? hi is a minus 2 centimeters. So height of image भी आ गया. अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी निगेटिव आ रही है, राइट? क्यों निगेटिव आ रही है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है.
सो भाई नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज अ नेगेटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का क्या मतलब है? आई हैव एक्सप्लेन दिस इन वन कंप्लीट वीडियो. इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, प्लीज गो बैक एंड सी दैट. कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. सो इफ माई मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, मतलब मेरा इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, एंड बिकॉज द न्यूमरल पार्ट इज ग्रेटर देन 1, so my image which is inverted is also magnified. So here is the nature of the image which has been formed. Well, the nature of the image very clearly can be written down as magnified, real, अगर real है तो inverted है, INVERTED. all right. So we have magnified, real, inverted image which has been formed. Here's our second question. So let us write down the details of the question. An object 2 centimeter high, that means height of object 2 centimeters, is placed at a distance of 16 centimeters. U is minus 16 centimeters from a concave mirror. Concave mirror means focal length negative है. We have done a question on concave mirror as our first question, which produces a real image. अब इससे क्या पता चलता है when it is said that the image is real and it has a height of 3 centimeters. So height of image is 3 centimeters. But यहाँ real से हमें क्या पता चल रहा है? रियल इमेज है मतलब इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है मतलब नेगेटिव साइन आएगी इसके साथ. सो VHI इज माइनस 3 सेंटीमीटर्स. सो अब आई हैव माई HO, आई हैव माई HI. सो बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी सॉर्टेड होती दिख रही हैं. कैसे सॉर्टेड हो रही हैं? वेल, हम अपना मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. बट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है. सो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, यानी कि हमें निकालना है F और हमें निकालना है V. राइट. सो शुरू करते हैं हम फिर. सो HO by HO is known, HI is known. So magnification निकल गया हमारा. So how much is my magnification? HI by HO. So HI की वैल्यू -3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, सो मेरा मैग्निफिकेशन माइनस आ रहा है, -1.5. राइट. मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती. ऑल राइट. सो अब इस मैग्निफिकेशन से हमें फोकल लेंथ कैसे मिलेगी? न U पता है, नहीं U तो हमें पता है, और F हमें नहीं पता, V भी हमें नहीं पता, तो निकालेंगे कैसे? व्हाट इज आवर मिरर फॉर्मूला? 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V. राइट. सो अब न तो हमें V पता है, न हमें F पता है, तो डालेंगे क्या? वेल, हमें जो पता है वो है मैग्निफिकेशन. So I can find out the relationship between U and V. How can we do that? Let's check it. So we know that magnification is also equal to minus V by U for a mirror. So can I say that minus V by U is also equal to minus 3/2? Well, certainly we can say that. So यहाँ मुझे U की वैल्यू पता है. How much is U? It's a minus 16 centimeters. And if it is equal to 3/2, well, V is equal to 3/2 into minus 16. कितनी आ गई वैल्यू? -24 सेंटीमीटर. सो सेकेंड पार्ट का आंसर तो हमें ऐसे ही आ गया. V की वैल्यू इज समथिंग विच इज अ -24 सेंटीमीटर. अब हम आराम से अपना फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. सो फोकल लेंथ इज हाउ मच? 1/F equals 1/-16 plus 1/-24. My LCM being 48, 16 3s are 24, 2s are -5/48 is 1/F. So what is F? So my F is, so F is equal to 48/5, negative -48/5. So अगर हम इसे कन्वर्ट करें, I will get a -9.6 centimeter as my focal length. निकालना क्या क्या था हमें? फोकल लेंथ निकालनी थी और V की वैल्यू निकालनी थी. दोनों वैल्यूज आ गए हमारे. Well, our focal length is a -9.6 centimeters and the value for
the image distance V is a -24 centimeters. कर लिया जी हमने second question भी. अब बढ़ते हैं third की ओर. Right? Ready for the third? So here it comes. It's a concave mirror once again. All right. So focal length होने वाली है negative. Now the concave mirror produces 3 times the magnified real image. So real है और 3 times magnified है of the object which has been placed at 10 centimeters in front of it. Where is the image located? Means निकालना क्या है हमें? V निकालनी है. Right? So पहले जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं एक जगह. So let's begin. A concave mirror produces 3 times the magnified real image of an object. So magnification कितना है? -3 है. क्यों -3 है? क्योंकि ये रियल है. राइट? ऑल राइट. सो रियल इमेज का मतलब है इट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड. इन्वर्टेड का मतलब है मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है. इट इज अ वेरी वेरी प्लेन कंक्लूजन विच यू कैन जस्ट रैंडमली ड्रॉ. ऑल राइट. So a concave mirror produces 3 times the magnified real image of an object placed in front or at a distance of 10 centimeters. So u कितना है हमारा? -10 centimeters है. v निकालनी है हमें. फोकल लेंथ तो हमें पता नहीं है, but magnification is something which I know. So I certainly know that hi by ho is equal to -v by u is equal to -3. अब u हमें पता है. I know my u. u कितनी है हमारी वैल्यू? -10 सेंटीमीटर्स है. So I can very well find out my v. ये दोनों तो चले गए. All right. So I am excluding this part. I don't need it presently. So what do I need? A v by 10 equals -3. So v is equal to -30 centimeters. आ गया. ये तो ऐसे ही हो गया. So be mindful of these important terms which are mentioned in your question. These will help you read the question correctly. So here's our next question, which is on convex mirror this time. So something different. All right. So let us begin with an object 5 centimeters in length, means the height of the object is 5 centimeters. Is placed at a distance of 20 centimeters. U is -20. Do not forget to attach the minus with U's. Alright. U अगर negative नहीं आ रहा means something गड़बड़ है. Alright. So distance is 20 centimeters in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeters. So इस radius of curvature से क्या हमें पता चलेगा? Focal length. क्यों भाई? Because twice the focal length is the radius of curvature. So if I know my radius of curvature is 30, well I know my focal length is half of it. That means my focal length is 15. अब इस बार प्लस है या माइनस है? Well just उल्टा होगा, right? Concave का माइनस था तो इसका प्लस होगा, but that is not the reason. So what is important here is अगर ये convex है means this is how our mirror looks like. And parallel incident light rays, अगर ये मेरा principal axis है, is going to appear, all right, it is going to appear to diverge from a focus which is virtual focus. All right. So focus मेरा right side में है. The principal focus is on the right means f is positive. So f positive है हमारा. Now that we know that, अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स आवर कैलकुलेशन. निकालना क्या है हमें? पोजीशन ऑफ द इमेज. पोजीशन ऑफ द इमेज मीन्स v निकालनी है. और क्या निकालना है? नेचर निकालना है एंड साइज. ऑलराइट. साइज मीन्स हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है हमें. तो शुरू करें. ऑलराइट. सो 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u. ऑलराइट. सो 1 बाय माइनस प्लस है, सॉरी, 1 by 15 is equal to 1 by v plus 1 by -20. So what is 1 by v going to be? 1 by v equals 1 by -20. Sorry, I'll get this here, this side. All right. So let me write this as 1 by 15. Minus will become a plus. 1 by 20 हो गया. LCM कितनी है मेरी? 60 हो गया. 15 4s up. All right.
So how much do I get here? 15 fours are 23s are, यानी कि 7/60. So this is 1/v. So what is my v going to look like? So v is 60/7 centimeters. So decimal में इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7 8s are 56, 7 5s are 35. So approximately 8.57 centimeters is going to be the value of v. That means the image distance is 8.57 centimeters. v here is a plus. इससे हमें क्या पता चलता है? Well, if you go back to the sign convention, anything which is plus is lying on which side? It is lying on the right side, right, of the Cartesian plane. So right side का मतलब है we are going to have a virtual image. अगर virtual image है तो कैसा होगा? Upright होगा. So the fact that the image is virtual and upright can just be ascertained by knowing the v, but we still have to predict the height of the image. So उसे हम कर लेते हैं calculate. अब ये हाइट ऑफ इमेज कैसे पता चलेगी? वेल मैग्निफिकेशन से पता चलेगी. सो मैग्निफिकेशन से निकालते हैं हम. ऑल राइट, सो वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u विच इज इक्वल टू hi/ho फॉर अ मिरर. ऑल राइट, सो हमें यहाँ क्या क्या पता है? v की वैल्यू भी हमने जस्ट निकाली है और निकालना हमें है hi. सो hi इज इक्वल टू, सो लेट्स कैरी द ho टू द अदर साइड. v/u into ho is hi. ऑलराइट, सो hi क्या हो जाएगा? v की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली है 60/7 एंड नेगेटिव v है, सो आई कांट फॉरगेट दैट. in now into ho is how much? ho is 5 centimeters is given to us. Here it is. All right, so now moving on to the final value of u की वैल्यू कितनी है? -20 centimeters. Here it goes -20. so कितनी वैल्यू आ गई? 3s are. so 15/7. 15/7 is how much? 7 2s are 14 and 1/7. So approximately 2.14 centimeter is the height of our image. This image is positive, right? Positive sign है height of image का. इसका मतलब क्या हुआ? Well, it is going to be an upright image. Now whether it is diminished or whether it is magnified, see what was our height of object? The height of object was a 5 centimeter. Now my height of image is a 2.14 centimeter. So very clearly it is a diminished, upright and a virtual image. Upright है तो automatic virtual है, इसमें तो हमें सोचना ही नहीं है. Moving towards our fifth question now. So an object is placed at a distance of 18 centimeters in front of a spherical mirror. So the kind of mirror is not known to us. What is given to us is u being 18 centimeters means -18 centimeters. If the image is formed at 4 centimeters to the rear of the mirror, इसका क्या मतलब है? Rear of the mirror means behind the mirror. Alright, so अगर मेरा u left में था, my image is on the right, so naturally दोनों का sign opposite होगा, so v would become a +4 centimeters. Now calculate its focal length and whether the kind of mirror is concave or convex is to be mentioned. I also need to predict the nature of the image. So formula लगाते हैं. 1/f is equal to 1/u plus 1/v. So 1/-18 plus 1/4. My LCM is 36. 18 2s are 4 9s are. So how much do I get? A 7/36 is 1/f. So focal length की वैल्यू कितनी आ गई? It's a 36/7 centimeters, which is approximately 5.1 centimeters. Again मेरा focal length positive है. Well, focal length positive मतलब किस टाइप का ये मिरर होने वाला है? This is going to be a concave mirror, क्योंकि focal lengths concave mirror की ही positive होते हैं. So I know my concave mirror is what I have here. अब nature of image तो मैं ऐसे भी predict कर सकती हूँ. The moment I know it is a concave mirror, हमेशा diminished virtual upright image form होता है, right?
बट नेवरदलेस अगर मुझे कंफ्यूजन है, सो आई विल फाइंड आउट माई मैग्निफिकेशन एंड प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द इमेज. तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं. हाउ मच इज माई मैग्निफिकेशन गोइंग टू बी? मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू. आई नो मेरा v की वैल्यू कितनी आई है और दी हुई है इनफैक्ट माइनस 4 बाई माइनस 18. सो हाउ मच डू आई गेट? 2 by 9, which is positive. Positive magnification with a numeral value lesser than 1 means, so this predicts that it is diminished. And positive means it is upright. Upright है तो virtual है, right? So this is what the question का answer looks like. So let's move forward with the sixth one. So what we have here is a concave mirror once again. What else do we know about it? Well, to obtain a magnification of +2. So magnification +2 है means it is a magnified image and it is an upright image, virtual है. So virtual and magnified by a concave mirror. All right. So this is the analysis by the magnification value which is given to us. All right, it has a radius of curvature of 60 centimeters means focal length is 30. प्लस होगा या माइनस होगा? कॉन्केव है तो माइनस होगा. So the focal length is a -30. I have to find out where the object should be placed. Means I need to know my u. U का आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए. Let us put these values in the mirror formula. 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. Now from the magnification value, I can find out the relationship between u and v. So 2 is equal to minus v by u. So I can very well say that v is equal to 2 times minus 2 times u. अब इसी वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है. सो लेट अस डू दैट. सो 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v can be replaced as a minus 2u. So minus 2u, my LCM being 2u will fetch me how much? This is a 2 minus a 1. So I get a 1 by 2u as 1 by f. So my focal length is a focal length is a 2u. Now since the f value is known to us, so minus 30 is equal to 2u, implying that u is equal to a minus 30 by 2. That is u is minus 15 centimeters. Now because I am getting u as a minus 15, well, my answer is correct. Let us now read through this question. A real image. So pay attention to the terms here. So the image is real. Real है मतलब inverted है. All right. Of a candle flame formed by a lens is 3 times the size of the flame. That means it is a real magnified image. All right. Means अब ये तो बहुत क्लियर हो गया. If it is a real magnified image, the kind of mirror I am using is a concave mirror, right? क्यों? Because real images convex mirrors form करते ही नहीं है. So it's as clear as daylight. All right. So and the distance between the lens and the image is 80 centimeters. इसका क्या मतलब है? Lens and the image distance means v is 80 centimeters. Now the image which is formed by a concave mirror, the magnified image has to be on the same side as the object. So u अगर नेगेटिव है तो v भी नेगेटिव होगा. तो v की वैल्यू मेरी -80 सेंटीमीटर्स है, right? So these are some obvious conclusions which you are supposed to draw. So because my image is real and magnified, I can very well say that the kind of mirror I have used is a concave mirror. And concave mirror which is forming real magnified images has to be having the image on the left side. On the left side. Right में image हमेशा virtual form होता है by a concave mirror. Alright. So V is negative. अब
ये तो क्लैरिटी हमें मिल गई. नाउ my more than half the battle is 1. So magnification is a -3. -3 because real image था. I know my V to be equal to a -80 centimeters. निकालना है हमें क्या? Well, हमें निकालना है the distance of the candle. Means U निकालना है हमें. What is U? Alright. So let us start. 1 by F इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई, मुझे इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे फोकल लेंथ दिया नहीं है. सो मैग्निफिकेशन इज गुड इनफ. सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू. ऑलराइट, सो दैट मीन्स दैट -3 इक्वल्स माइनस ऑफ -80. वी की वैल्यू -80 है बाई यू. ना माइनस ऑफ -80 का क्या मतलब है? -3 इक्वल्स 80 बाई यू. सो व्हाट इज माई U equal to? So my U equals how much? 80 by -3. 80 by -3 means a -80 by 3 centimeters is my U. So here it is. We have done the question. बहुत छोटा question है, but there are so many conclusions which you will have to draw from the terms in the question. If you are unable to do this, naturally you are not going to come to your answer. Here's our final question for today. So we have a security mirror which is used in a big showroom having a radius of curvature of 5 meter. If a customer is standing at a distance of 20 meters from the cash counter, find the position, nature and size of the image. All right. अब सिक्योरिटी मिरर में किस टाइप का मिरर होता है? कॉन्वेक्स. क्यों कॉन्वेक्स होता है? बिकॉज यू नीड टू सी ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर एंड अपराइट, राइट, सो दैट यू हैव अ ब्रॉडर visibility. Now to do that you are using a convex mirror. अब convex mirror का characteristic होता है upright diminished images, right? So nature तो हम ऐसे ही predict कर सकते हैं, but we'll gradually come to that answer. So we have been given the radius of curvature as 5 meters. So what is the focal length of this convex mirror? 5 by 2, half the radius of curvature. Now plus or a minus? Well, it is a plus because it is a convex mirror. Right? Now let us write down the distance of the person who is standing is 20 meters. 20 meters matlab, well, this is the object distance and it has to be a minus. What about the image? This is what I have to find out. So 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. I have to find out v. So I can write this down as 1 by v equals 1 by f minus 1 by u. So what is my f? So 1 by 5 by 2. 1 by 5 by 2 का मतलब क्या है? 2 by 5 minus 1 by u is a minus 20. So a minus of a minus means what? What do I get? Plus हो जाएगा. My LCM is now a 20. So how much should I get? 5 4s are 4 2s are 8. 20 1s are. So I get a 9 by 20 as equal to my 1 by v. So my v is going to be a 20 by 9 centimeters. I now need to predict the nature of my image. So मुझे करना क्या है? Magnification calculate करना है. So let us calculate our magnification and find the nature of our image. Now magnification is equal to minus v by u. What is the value of v which we just calculated? It's a minus 20 by 9 is our v. u की value कितनी आई है? Well, u is given to us as a minus 20. So let's feed in these values here. So this is a minus 20, minus minus gaya, 20 20 gaya. So I have a 1 by 9 as my magnification. So what can I say about the nature of the image? My magnification is a positive value, meaning my image is upright. And what when the numeral value which is associated with this positive magnification is a value lesser than 1? That means that my image is diminished. So I have a virtual upright diminished image. And that is it for today, guys.
hope you have got a better understanding of the topic now, and if you do, remember to give me a thumbs up. That would be very appreciated. Thank you for joining me here today. Bye bye.